मुझे pronounces के बारे में जानना है. She, them, they. Of course, everybody knows about LGBTQ community. I am drawn towards the same gender. So that's when you don't want to be called by that pronoun because it's somewhere. When Ram Bhagwan came back from his sannyas of 14 years, they were the only people who were standing for his welcome. A lot of people make jokes around it and don't accept. Welcome everyone to the ASP show. So today we have got Dr. Nandini Bhanushali who is going to speak about womanhood. We have specific questions to ask her and I think she is the perfect person who can answer all of them. So hi, how have you been? Hello, thank you so much. First of all, thank you so much for having me here. Or the kind of comfortable you guys have made me before even we started the camera is I think I was not expecting. But I think I have a good energy, good positive feeling about how this podcast is going to go. So I'm excited about all the possibilities. Wow. Thank you so much. Thank you so much. I am great also. How are you guys? हम लोग अभी कैमरा स्टार्ट होने से पहले तो क्या कर रहे थे हम लोग वही पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं वही हमारा मूड भी है क्या बोलते हैं प्रतीक शानदार too good high vibrational high energetic positive happy and let's see how it goes ahead. Yes. स्टूडियो कैसा लग रहा है? स्टूडियो इज़ ब्यूटिफुल लाइक आई वुड नॉट लाई मैं जब एंटर हुई यहाँ पे द काइंड ऑफ वेलकम यू गॉट फॉर मी एंड देन आफ्टर व्हेन वी केम टू द प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे जहाँ हम शूट कर रहे हैं द एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी लाइट एंड ऑल्सो आई वॉज टेलिंग प्रतीक की बहुत अच्छा हाई मतलब यू नो द लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड जस्ट एक कमी है कि कोई भगवान जी की मूर्ति होती है एंड देन ही ऑल्सो शोड मी गणपति बप्पा की मूर्ति है छोटी सी एंड देन इट वॉज लाइक चार चांद परफेक्ट एवरीथिंग वॉज परफेक्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट आई लाइक द स्टूडियो एंड एवरीथिंग परफेक्ट सो यू नो आई विल बिगिन आई विल जंप बैक टू द टॉपिक अगेन so I have this specific question most of my female friends prefer to hang out with their male friends because they believe that the female friends are more bitchy, more jealous, or fake at times. Why is that? I don't think. I will talk about myself. Okay. I don't think I prefer male friends over female friends, and I don't think it's because female friends are bitchy and they don't like. But the kind of fun you know you're going to have with the boys, you know you're not going to have with the girls, and of course the society that we live in, if a girl if only girls are planning a trip or planning to go out hang out, you got to go get permission from your parents and then हर एक लड़की का अपना अलग अलग रहता है. So if you are a girl in that particular group where your parents are chill, then it becomes a little boring for you, and then that's why you need to go with the boys because boys are always ready. चलो adventure fun चलो जिधर जाने चलो just like you कहीं पे भी आप पहुंच जाते हो trek ये वो trek and lakes and everything. So even I like that, and my mother, she's a single mother and she's like always taught me things since my childhood. The good ones, what are the good ones for me, what are the bad ones. She's always held my hand, but she also knew when she has to let it go so that I could also run in my life. मैं दौड़ पाऊँ, right? And she did that. And touch wood, I have got very good male friends in my life, and I am coming more in मतलब और ऐसे लोगों से मैं मिल रही हूँ now. Also females who are as same energy as mine, I am getting to meet them, new people in my life, entering new people in my life, and as my versions update of who I am is how the same energy people I am coming face to face with. Wow. And I think they teach me a lot of things. Some things they learn from me, and most of the times I've seen that my sister struggling it as well, that female friends are not always sure about their female friends. They are, but I'll tell you, females become friends with males and the connection becomes instantly. If you connect with a male friend, it is instant. But female friends
take time, and that connection, and it's not similar. The connection that females have with each other is not the same as a female who is going to have with a male friend. It's different. It's more intense and more special. That's why it takes more time, and very few people today are willing to give that time and effort into. Now I'm not talking about male and female. Friends in both general. yeah friends in general, people in general. आज की तारीख में लोग वो एफर्ट डालने के लिए और वो जो टाइम होता है वो बहुत कम अभी आजकल मैं लोग देखती हूँ जो willingly they want to put it. तो फीमेल फ्रेंड्स का भी वही है, बिकॉज once the friendship gets to that point where it's intense and you are friends for life, that is going to take time, and people are not willing to give time. So that what happens. And when it is with a male friend के साथ भी I feel ये होता है कि you know, the male friend is always going to be there for you. He listens to you, you rant, and you know, you cry कि मेरे लाइफ में ये वो, तो वो हमेशा रहते हैं. So that's how a female starts feeling connecting to the male. And I feel it's much more easier because these energies are opposite. Right, a male energy and a female energy is opposite. That's why I think the female and the male connection is instant. Whether it be friend, whether it be relationships, and females का connection is intense and it takes time. But एक बार हो जाए तो फिर yes, then it is for lifetime. फिर तो nobody comes before her. It's like that, but it's very rare in today's day. Very. You have someone who you can mention? Female friends, yes, I do have some, but unfortunately मुझे उनके साथ time spend करने नहीं मिलता. But when we were together, that was in my junior college, 2 years of my life, I have met incredible people, guys and girls both, especially girls I'll say. And आज भी जब वो मेरे home town में जब मैं जाती हूँ and out of nowhere मुझे कहीं दिख जाते हैं, and the energy that we both are meeting with at that particular time, कितना भी दूर रहेंगे तो ऐसे चिल्ला के बुलाएंगे, and then we'll run towards each other, hug and everything. You will see in my previous vlog, one of my friend, that's how I met her, and that's why that's clicking right now in my mind. हम लोग ऐसे मिले and hug किया, and ऐसा नहीं कि हम रोज बात करते हैं, but उस time पे जब you see them and you are like, because you know they are someone who is going to be there for you no matter when you call them, what situation you are in, they're going to be there emotionally, mentally. रहेगा ना तू देखते. And same, I think same goes with the male connection. Yes, males also connect very instantly, but not every male friendship goes that long. Also that also requires effort, right? तो वही हो जाता है same. दोनों साइड से effort आना चाहिए. And अपने comfort, whenever you want to form intense bonds, something that is intense, something that is long term will take that much of time and will take that much of effort. है ना, ऐसे नहीं बनता. If something मतलब that is what I mean. Something which is going to be long term, something which is going to be long term will take that amount of effort, time and love and going out of your comfort zone for that person. Yes. It's like companionship and effort से होता है. Yes, and very few people in today's date I feel are ready to do that. And some people that who do these things do not get reciprocated at times, some situations, and then they you know, limit themselves. वो limit कर देते. They close their heart. They don't want to be open for someone else again and explore the opportunity कि maybe this person can be right. You never know. वो बहुत relationships में भी same है, friendships में भी, हर एक relationship में. तो this is what I wanted to say. So you said about relationship. तो मुझे पूछना था आपसे कि बहुत लोग, बहुत बच्चे हमारे जैसे फ्रेंड जोन होते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव कि कैसे फ्रेंड जोन से बाहर निकल सकते? How can boys? हाँ, yes. Frame it. How can boys? So a lot of my male friends also have the same question. There is one of my friend जिसको हम बहुत चिढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड जोन होते रहता है, no matter how much जितना भी कर ले, जितना भी वो कर ले उस पर्टिकुलर लड़की के लिए एक्शन में वो. But I feel if a girl is really sure about you, wants you,
she is going to make sure she has you. But She has you in her life. She's going to make sure. अच्छा. She is going to tell you. She is going to give you that hints, and she is going to let you know clearly that she wants you. But so the thing is, why do boys get friend zone? Is you yourself are not sure about that girl, because if you were sure about that girl after taking certain efforts till एक point तक, you are going to confess her. Your heart will, वो मानेगा ही नहीं तुम्हारा दिल. But you're still in duality. Boys have, yes, I can agree. है ना? Yes. समझ रही हो? ये दोनों साइड होता है. लाइक लड़की का भी वही होता है एंड लड़के का भी वही होता है. लड़की भी देखती है, एफर्ट देखेगी, फिर वो ज़्यादा लेट नहीं करेगी. She will not take much time if she's sure about you. She will let you know. She will tell you. At least she will share her feelings about what she's thinking inside. And I feel when the connection is true, when the connection is meant to be, and if you are aligned with who you are in yourself, something is going to draw you towards that person very strongly, and you are going to take that step. You don't know, like of course consequences बहुत सारे हो सकते हैं, possibilities बहुत सारी हो सकती है. If I do this, if I tell him or if I tell her, possibilities are going to be a lot, negative, positive, both. But what becomes important for you at that time is I want to tell her. I just want her to know. I just want him to know. बाकी फिर जो होता है वो जो होना होगा वही होगा. But so I think वो एक टाइम होता है जहाँ तक you should do it, give efforts. Boys के लिए give efforts, and then you see how the girl is reciprocating with it. Is she also giving you the same? So reciprocate कर रही है. Not only कि बातें करना ये वो नहीं, but the amount of efforts you are putting, are they getting reciprocated, or does she appreciate it? If she is doing that, समझ लो कि right track पे जा रहा है, and then you have to like shoot that shot about telling her your feelings at the right time. Yes. वो window होता है 10 seconds. Yes, वो एक window period होता है. You need to share your feelings. I am not saying you ask her, you tell her, you share it. कि मतलब हाँ, the window period has arrived. हाँ, you of course वो समझ आ जाता है हमें, right? Because you have done something you would not do for anyone else. Correct. So when you start doing something like this, you know you are in love. Yes. And that's the time when I think you should then share your feelings and not mindlessly just keep giving, because then you are going to get hurt. Got you. So that's how you cannot get friend zone. समझ रहा हूँ मैं. रूप में मेरी कंडीशन आइडियलाइज कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ अभी. ठीक है, हाँ. Because if she was for you, she's going to appreciate it, she's going to reciprocate it, and she is going to let you know how you make her feel. She's also going to share her feelings with you. And if she doesn't, make sure you do, because you are giving the efforts and you don't want to get friend zone. अभी clear perspective आ गया. Yes. So I'll move on to the next question. That is, what is definition of masculinity for you in today's generation? Because आज की जो अपनी generation है वो एक clear mind में नहीं है, ऐसा duality में जीते कि okay ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है. तो आई फील मैस्कुलिनिटी के बारे में काफ़ी रॉन्ग थॉट्स है. कभी कभार वो राइट मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोलते हैं, कभी कभार टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी राइट बोलते हैं. एंड्रू टेट. डू यू गाइस फॉलो हिम? यस. डू यू लाइक हिम? उसके जो मुझे 50% मुझे पसंद है. सेम बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उसके जो क्लिप्स है वो पॉडकास्ट से उठाए गए. करेक्ट. एंड अगर हमारा भी कोई पॉडकास्ट अगर क्लिप्स उठाएगा तो दे आर आउट ऑफ रेफरेंस. मतलब अभी हम सार्कास्टिकली कोई बोल रहे हैं, ह्यूमर वे में बोल रहे हैं, तो वो ऑडियंस ऐसा क्लिप्स वाइज देखेगी तो उनको वो रियल समझेगी. तो समटाइम्स ही इज स्पीकिंग फैक्ट्स बट उसका बोलने का तरीका सही नहीं है. वो एक चीज है. बट आई थिंक ही इज गुड. ही स्पीक्स फैक्ट्स जो शायद कान में हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते. I completely agree with you. The way he portrays it, जैसे वो रखता है, is a little wrong. More than suppressing the other gender, you should try to superiorize your own gender. Okay. Talk about your own gender rather than women ये women वो. You should first try to लाइक फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज़ में ये हम जोड़ सकते हैं इस एग्जाम्पल को कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को किसी से, या वी आर कॉम्पिटिंग आवर सेल्स विद समवन एल्स who is of another gender.
No, another gender, another person. Okay. Just an example, pure example. If you focus on your growth more than what the other person is doing, you are of course going to get to a point where you are satisfied with your efforts. बट अगर तुम वो टाइम इसमें डाल रहे हो कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है ये हो, तो मेरे को वो उसका थोड़ा पॉइंट गलत लगता है कि वो वुमेन को ज़्यादा क्यों टॉक अबाउट मैन. वी वांट टू इवन वुमेन लव मैन राइट. हम जो फेमिनिज्म का एक बहुत गलत डेफिनेशन काफ़ी लड़कियाँ भी आज के टाइम पे आई फील लाइक इनकलकेट कर चुकी है, और काफ़ी मेन भी. फेमिनिज्म का नाम लेते ही मेन गो लाइक ये फेमिनिस्ट है, ये फेमिनिस्ट है. But no, feminism is more than just what surface level पे practically portray किया गया है. It's like you asked, now let's come to masculinity again. So for me, masculinity, a pure and healthy masculinity is something who provides, who protects, makes you feel safe, secured, and safe and secure. I think these two are very important for me. And if any man who is willing and is already healed in himself to portray these emotions and expressions truly to his woman, his family, his children, is someone who is a healthy masculine. And when a masculine is completely in his healthy state, is when you allow your woman, your family and your children to be in their complete healthy feminine state. So when you are masculine, your masculinity is healthy, you are also allowing your feminine to go in her feminine side. Got you. You know, a lot of at आज के time में you see, even I am one of them, कि being a female, but you see them, you see a bold personality, you see कि अरे किसी से भी लड़ जाएगी ये वो, because she has learned to protect herself, because men in her life failed to do that for her. And then she instantly recognizes the men. Now after what I have learned in my healing journey, and I will not say I completed that, healing is every day until I die, until everyone dies. Healing is every day, because the kind of world we should not be hard on ourselves. Yeah, no, you should not. And so I'll complete and then I'll come to something else once I say. Sure. So where was I? क्या बोल रही थी मैं? Healing के पहले. Editor bye. Okay. So healing is important, like for everybody to be in their complete self, who they are made as a human. So a man is made of masculine energy and a female more of the feminine energy. वही होता है कि when masculine is more in his masculine energy, is in healthy masculine energy, is when you allow your female to be in her feminine side. So when I met this man in my life, I realized now it's time to get soft. Now I cannot be like कि अरे किसी से भी लड़ जाओ, because now it's his role. I've seen the change in your Instagram reels. Yes, now because now it's his role and he's adapting it very well. Now ultimately मेरा nervous system naturally calm हो जाता है, soft हो जाता है, sensitive हो जाता है, which is my true state as a female. Right, and when I am in my true state, I am more aligned with who I am, and I attract good things. I attract growth. Is when it becomes natural for me. Growth becomes natural for me. And I feel now, again coming to key masculine and feminine energy, I feel every individual has both of them. Every individual has both of them. An individual who is working towards balancing them, both of the energies. Is it problematic when a man becomes too much feminine? Not at all. Why would it be problematic? Yes, it is problematic for the society. Okay. In a mass public who make fun of people. I have seen male who are very much feminine, who are described in their nature. The way they are going to make you feel is going to be like they are going to be very gentle with you. They are going to be very soft with you. Yes. They are male and they are male in them, but the feminine energy is dominant in them. Same you see in a woman also. तो उन दोनों का बैलेंस होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड जब तुम रिलेशनशिप में हो तब तुम्हारे अंदर जो डोमिनेंट है उसको तुम कैसे पोर्ट्रे करते हो सामने वाले के लिए, फिर वो सामने वाला अपने जो डोमिनेंट साइड में या जो मोर ऑफ उसमें चला जाता है. Got you.
बट प्रतीक ने मुझे बोला कि कंडिशन है उसकी कंडिशन के बारे में कुछ तो बोला व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड झोन. तुम्ही सांगा तुमची काय कंडिशन काय आहे? माझी काय कंडिशन नाही, मी योग्य मुलीची प्रतीक्षा करतोय. ओ नाईस. आय होप त्या योग्य मुलीपर्यंत हा पॉडकास्ट जावा. पोचेलच, नक्कीच पोचेल. ती पण प्रतीक्षा करत असेल. चल. सो यू नो अगेन ये आज की जनरेशन के बारे में पूछना है मुझे कि मुझे प्रोनाउंसेस के बारे में जानना है. शी देम दे. इवन तो मुझे एक 50% आइडिया है, बट आई वांट टू नो अबाउट इट इन डिटेल. ओके. बिकॉज आई थिंक ये ऑडियंस को जानना ज़रूरी है और अपनी जनरेशन को तो जानना ज़रूरी है. एंड आई थिंक अगर अपने माँ बाप की जनरेशन मतलब पीपल आर इन देयर 40s 50s उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है. So for example, right, that I am drawn towards the same gender, or so that's when you don't want to be called by that pronoun because it's somewhere eating you inside, even though you don't say it. And of course, everybody knows about LGBTQ community. So now pronouns do not pronouns related नहीं है, bounded नहीं है इस community से. Even if like, but they do come from there only. People, me for example, being a female, I don't like to be called as a she because inside I don't feel like a she. I feel like a he. Okay. So then that's when I would appreciate if my people, my friends, my family would call me a he. And then there comes he she का सेम हो गया ऐसे ही. तो she होगी मतलब अगर वो he है but उसको अंदर वो खा रहा है कि because he doesn't feel a he inside, so he will ask कि they will say कि it's better you call me she because this is how I feel about myself. And then comes they and them. So they and them are the ones who want to be pronounced as they and them. Again, not related to sexual preference or sexual identity. किसी का ये भी मानना होता है कि हम नहीं मानते फीमेल मेल, ये शी होता है, ये ही होता है. वी थिंक कि एवरीथिंग इज वन, एवरीबडी इज वन. सो एक ये हो गया. सो आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड एज दे बाय माई पीपल. एक ये हो गया. फिर एक हो गया कि सेक्शुअल प्रेफरेंस, सेक्शुअल आइडेंटिटी के बारे में, नॉट प्रेफरेंस, आइडेंटिटी के बारे में आखिरी बात. That they themselves don't know if they completely feel a he or completely feel a she. So then they will say ki my pronouns are they and them. And I feel it's very natural someone to feel like this. A lot of people make jokes around it and don't accept. भले हमारी generation काफ़ी chill है, LGBTQ community इस हद तक, you guys don't mind ना? LGBTQ community इस हद तक आ चुका है where people inside are very accepting, especially our generation is very accepting. Everybody has friends who is out from their closet and they are open. Parents have become very accepting and open toward their kids because finally जाके ये समझ आया कि बच्चा मेरा है ना? Kid is mine. So and love is everything, the last magic that is left on earth. So you need to keep loving no matter what, no matter like एक बच्चे की sexual identity और sexual preference क्या है उस पे मैं मेरे बच्चों को जज नहीं करूँगा. तो now again this thing goes back in days बहुत पहले जब त्रेता युग भी चल रहा था. उस टाइम पे भी जो हम कहते हैं किन्नर थे. Yes, there is one story if you guys have heard about it. About when Ram Bhagwan came back from his sannyas of 14 years, he said people were not letting him go. So when Ram Bhagwan was leaving for the sannyas of उनके सीता माता के साथ and लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण भगवान के साथ, तब लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे थे. People were not letting him go because everybody knew what happened and why was he leaving. Male and female were not letting him go. In general, the entire crowd, the entire mass of that particular area, Ayodhya. Ram Bhagwan ने बोला कि nobody will like be here when I'm leaving. कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे. And तो उस टाइम पे राम जी ने ऐसा बोला था कि मेल एंड फीमेल्स, ऐसा हिंदी में कि मर्द और औरतें नहीं रहेंगी यहाँ पे when we will be leaving and when we will come.
तो उस टाइम पे ही डिडंट मेंशन द किन्नर समाज, तभी भी चलता था, ये एक स्टोरी है बाकायदा, ही डिडंट मेंशन देम, एंड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज संन्यास दे वर द ओनली पीपल हु वर स्टैंडिंग फॉर हिज वेलकम, because they are neither male neither female, right? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था कि यहाँ पे he भी yes she भी yes no neither male neither females will be here or neither children, बच्चे भी नहीं होंगे, so they were the only people who were there for his welcome when he came back from the 14 years का संन्यास. This is a story. तो उस टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, and I don't understand, and I feel somewhere जैसे युग बढ़ते गए, I feel like हम कहते हैं वी आर साइंटिफिकली डेवलपिंग इवॉल्व, बहुत आगे पहुंच गए और पहुंचने वाले हैं. आई फील theoretically मे बी येस, एंड प्रैक्टिकली जो चल रहा है साइंटिफिकली मे बी, बट समवेयर आई फील जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसे हमने सिर्फ रीडिस्कवर किया है. इट्स ओनली बीन रीडिस्कवर्ड, नथिंग इज़ बीन डिस्कवर्ड. जो ऑलरेडी था, विच वॉज बर्नड, which was suppressed, that knowledge was suppressed, जो हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने लिखा था. Now one thing again, earth is flat, ये बोला जाता था, ठीक है, but we already knew. संस्कृत में earth को बोलते हैं, yes, you know, you seen that, no? Exactly, right? Exactly, yes. So ये कहाँ से आया? We already know that, and वही होता है कि वही है कि पहले से चीजें चलती आ रही है एज अ सोसाइटी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ये जो 1000 सालों में जो इन्वेजन्स हुए हैं, फिर अभी जो ब्रिटिश लोग आए थे 250 इयर्स अगो, उन्होंने तो पूरा ही हटा दिया सारा जो भी था नॉलेज. एंड आस एज अ सोसाइटी आर लाइक रिग्रेसिंग, आई फील लाइक इमोशनली एंड एम्पैथेटिकली हम रिग्रेस हो रहे हैं. बेनार सेड टू नॉट क्राई, व्हिच आई थिंक इज द मोस्ट, हम कहते हैं ना कि किसी को सजा देनी है, तो तुम बोलो कि तुम अपने इमोशंस क्यों फील कर रहे हो, है ना? वो उससे बड़ी क्या हो सकती है किसी के लिए सजा? तो आई फील लाइक मेन इन दिस सोसाइटी हैव आल्सो बीन लाइक taught something same as women. They were taught and they were said something which is not true about a male's and a female's existence on this earth. But somewhere some people couldn't grasp the concepts which were written at the same as they were meant us to grasp it. कुछ लोग वो चूक गए उसमें, कुछ लोग फेल हो गए उसमें, एंड देन जो उनको समझ आया वो उन्होंने आगे प्रीच किया. एंड वो एक होता है ना विस्पर, कान, वो गेम होता है कि कान में कुछ विस्पर करो फिर अलग अलग, तो वो हो चुका है आज. But somewhere if you go deep in everything that has been taught, that has been written in our books, in our spiritual books and everything, you see that हर एक like ग्रंथ साहिब जी हो गए, हमारा भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया. If you read them, each one of them, and if you go in their actual meaning, you see everyone is saying the same thing. Every book is teaching and preaching you the same exact thing. It's just and then and somewhere जैसे हमारा लाइफ आगे बढ़ता गया, जैसे युग आगे बढ़ते गए, जैसे एराज आगे बढ़ते गए, different saints, different prophets, different like identities were born to preach the same thing again. क्योंकि कहीं ना कहीं God also knew that यार the people on the earth are forgetting what I already preached and I left. So now I need to send some of my people, higher good souls on the earth to preach things. तो अभी I don't know, अभी भी है. There are a lot of people, but I will like I am not gone deeper into that, but I feel there are. तो वैसे लोग आए, फिर प्रॉफिट्स आए, प्रॉफिट्स ने प्रीच किया, से हमारे सेंट्स आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने प्रीच किया, बट कहीं ना कहीं उनका बोलना वही था. दे मेंट द सेम थिंग्स, बट द पीपल एट दैट टाइम व्हेन दिस प्रॉफिट्स वर बॉर्न, व्हेन सेंट्स वर बॉर्न, पीपल एट दैट टाइम, some people failed to grasp that concept the way it was preached, and when it was their time to preach ahead, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई उसमें. एंड देन द पीपल हु ग्रास्प इट, हाँ वो एक मतलब का कुछ और मतलब, हाँ. एंड व्हाई? बिकॉज आई फील कि जैसे युग आगे बढ़ रहा है, इंसान का ईगो ज़्यादा हो रहा है, ईगो बढ़ रहा है, नेचुरली ईगो बढ़ रहा है, और जो
काइंडनेस, लविंग नेचर, जेंटल, वो जा रहा है, ह्यूमैनिटी वो कम हो रही है. एंड आई थिंक दिस इज समवेयर मेंट टू हैपन. कलयुग है. व्हाट डू यू थिंक दशावतार कब आने वाले हैं? कल की. Oh, yes. I was going to speak. Acha, you asked me. I feel not much time left. Not much time. 6 months? Because some people think Kalyug hai. Tomorrow. Okay. You never know. Okay. You never know. It's already What was- happening. जो what- अपन ने ग्रंथ में देखा. Exactly. What do you think was COVID? हाँ. What do you think was COVID? Some people will say maybe geopolitical. Maybe वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर. बट दैट इज हैपनिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ, यही हम इंसान ही बर्बाद करने वाले हैं. भले वो नेचुरली हुआ या इट वाज ड्यू टू द जो वॉर कह रहे ये वो जो, बट हुआ. हम इंसान ही कर रहे हैं या जो भी नेचुरली हो रहा है, दैट डजंट मैटर, बट इट हैपेंड एंड थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग टू हैपन एंड इट इज रिटन. देयर इज वन मोर स्टोरी इफ यू गाइज नो अबाउट Tretayug. Okay. So when the so Ramayan जो हुआ, that was entirely based on Tretayug. Just imagine वो कितना बड़ा चला होगा, the Ram Setu and everything. तो जब Tretayug was at its end and the good souls, the divine souls. आपने त्रेतायुग के बारे में काफी बात की अभी, लेकिन लोगों को बताओ कि त्रेतायुग एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ, पहले ये बता दो. So Tretayug started after Satyug, Dwapar Yug, and then Tretayug. So at the end of Dwapar Yug, when the Dwapar Yug ended, that is when Tretayug started. Okay, so हम Tretayug की बात कर रहे हैं. So Tretayug is the second Yug. Okay, अभी मुझे realize हुआ जब मैंने चारों युग के नाम लिए. So Tretayug is the second Yug. A lot of people misconcept it with third Yug because Treta लिखा होता है. थर्ड में तो महाभारत हुई थी, right? Yes, and that was Dwapar Yug. And Tretayug was second Yug. But a lot of people misconcept it with Treta, अभी जो मुझे भी हुआ. So Tretayug was the second Yug. When Satyug got over is when Tretayug started. Okay. So what were you at again? Like मैं बीच में बोल दिया. क्या? What were you at? You were saying something about Tretayug story, like Ramayana इतना. हाँ. That's what I'm going. So and when Tretayug ended, Dwapar Yug started. Okay, and it is written. रामायण हुई, महाभारत हुई. रामायण से ज़्यादा ईगो हमें महाभारत में देखने मिलता है. कलेश, फैमिली में, ब्लड लाइन में ईगो आ जाता है. So this is something. भाई से लड़ रहे हैं. Yes, exactly. जो रामायण में इतना नहीं था, but देखा है हमने. तो रामायण में तो दिस इज हाउ इट, द रामायण एंटायर Ram's journey was entire in that particular yug, that is Tretayug. So there is one story when Tretayug was about to end and the divine souls, Ram Bhagwan, who was Vishnu Bhagwan's avatar, I think he was 8th or something, 8th avatar थे वो उस युग में. And when it got over, so Hanuman ji सबसे बड़े भक्त राम भगवान के, right? So and Hanuman ji had been given a blessing of being a Chiranjeevi. And Chiranjeevi is immortal. आज भी हमें वो energies इतनी strongly feel होती है हनुमान जी की कि I feel he is somewhere out there. मैंने अभी ड्रीम किया है मैंने for real. He is somewhere out there. But बहुत सारी स्टोरीज भी है ऐसे कि बहुत लोगों ने देखा है यार. Exactly. एक कोई तो गाँव है, मेरे को याद नहीं उस गाँव का नाम, बट बोलते हैं कि हर 14 साल में या 40 साल में वहाँ पे एक बार वो उन लोग से मिलने जाते हैं. नेट पे अवेलेबल है वो. Will tag the photos there. Exactly. So the story begins with when Ram Bhagwan had to go back. Everyone, Sita Mata वापस इनके realm में उनको जाना था वापस. तो हनुमान जी चिरंजीवी है, he cannot go with them. So हनुमान जी was जिद पे अड़ गए कि no, how are you going? नहीं, I will not let you go. मत जाओ करके मुझे भी ले चलो और stay back. But that was not possible. तो what राम भगवान does is कि उनके हाथ में एक अंगूठी होती है, ठीक है? I know what it is. And he sees there's a crack between on the land. On the land there's a tiny crack. So he says अच्छा okay ठीक है चल मान लेता हूँ. And he removes that अंगूठी and हनुमान जी तो सब करते जो राम भगवान बोलते. He removes that अंगूठी and he drops it between those cracks.
एंड ही सेज हनुमान जी को कि ओके फाइन, बट एक शर्त है, जो अभी मैंने जो गिर गया मेरा, जो विटी मेरी गिर गई, जो मेरी रिंग गिर गई, आई वांट यू टू गो डाउन एंड ब्रिंग इट बैक. एंड हनुमान जी हैज ऑल्सो हैज द ब्लेसिंग ऑफ चेंजिंग शेप्स एंड फॉर्म्स, राइट? सो ही गेट्स स्मॉल एंड ही गोज इनसाइड द अर्थ, मदर अर्थ. एंड व्हेन ही गोज डाउन he sees there are millions and trillions of same kind of अंगूठी there, ऐसे ढेर पड़े सेम अंगूठी के. So what does that mean is कि उतनी बार ये साइकिल हुआ है, उतनी जितनी वो अंगूठियाँ है ना, मिलियन ट्रिलियन अंगूठियाँ नीचे, उतनी बार ये सतयुग त्रेता ये साइकिल चलता है. एंड everything in nature has got its form, is in life only when it is running in a cycle. Everything, every human, a woman, a man, everything, the solar system, the nature, the climates we see, everything is a cycle. Is only when it can come into existence, it can have a life form. तो यही चीज़ है कि तो हम क्यों आए थे स्टोरी पे, वो भूल गई. त्रेतायुग चल रहा था. हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम त्रेतायुग. तो इतनी एंड देन ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जैसा है. yes and I feel like there are dimensions also. Yes, multiple dimensions. And maybe not on this planet, but on other planets something same like this is happening in other planets. You never know. अब वो concept इतना मैंने डिटेल में कभी गई नहीं हूँ, but you know what, it takes a lot. It takes you to be very calm and aligned with yourself and your nature to read and study about things like this, because you will go mad then. Shiv Bhagwan, Shiv ji, and he also needs a right guru to guide you. Yes, it's very important. And आज के टाइम पे how are you going to? So मैंने एक चीज़ पढ़ी थी एक बुक में कि ह्यूमन ऑन अर्थ आर द सोल्स इन दिस युग, अभी के युग में जो ह्यूमन है ऑन द अर्थ इन दिस युग, जो सोल्स एज अ ह्यूमन अभी के अर्थ पे जो बॉर्न हुई है या बॉर्न हो रही है या लाइफ जी रही है, दे आर फाइटिंग द टफेस्ट बैटल. एंड इफ अ ह्यूमन सोल, if a soul as a human overcomes and leads a good life, he is going to get much पुण्य, जो बोलते हैं हम पुण्य बोलते हैं, गुड डीड्स. यस, गुड डीड्स, यही वर्ड, गुड डीड्स. वो बहुत ज़्यादा उसको उस अदर वर्ल्ड में, wherever we go after we die, the other realm where the divine resides, वो लेके जाता है. Only when he passes this school of earth. Not easy for us. तो हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर बहुत सारे, मतलब अगर इस जनरेशन की बात करें तो मिक्स मेंटेलिटी के बहुत लोग हैं, राइट? थोड़ा 50% ऐसे 50% वैसे, बहुत कुछ डिफरेंशिएशन है उसके अंदर. सो व्हाट डू यू थिंक कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ऑफ कोर्स जितना, एक हमेशा याद रखना कि जितने लोग किसी एक चीज़ के बारे में बुरा बोल रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, उतने ही लोग अच्छा भी बोल रहे हैं और जा रहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ. Here we are sitting, three young youth of India talking about spirituality, talking about सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग. इससे बड़ी बात अभी तो कलयुग चल रहा है, बट डोंट यू थिंक पिछले, मैं कोविड के बाद से चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अचानक शिफ्ट आ रहा है ऑल ऑफ अ सडन इन इंडियन ऑडियंस. Yes. Everyone is driven towards this kind of content. Yes. Why is it happening? First of all, there are a lot of reasons. Some of them I will mention. Okay. First of all, people got time for themselves. So they started questioning a lot of things which they were not able to, or what were not given the time and the space when वो एक हसल कल्चर जब चलता है. एंड कोविड में सब थम गया था. एवरीबडी गॉट लाइट, एवरीबडी गॉट, a lot of people faced losing their loved ones. More questions, that brings more questions ki why. And when a person starts asking why, is when and is determined to find the answers behind why, is when समझ लो कि वो इंसान healing journey पे अपने शुरू हो गया है. This is the first step which was similar for me.
I started asking that if I am in a situation right now which I am not liking, which was chosen by me, then, and I'm not liking it, why did this happen then? Why did this happen? And then I got the answers. And when I got the answers, first of all, asking why is recognizing that something is wrong. है ना? तो वहीं पे तुम्हारी पहली जीत हो जा रही है. यही वही. So जब कोविड में टाइम मिला लोगों को, तो लोग ने वाई पूछा कि कोविड आया क्यों, कैसे चालू हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया. तो काफ़ी लोग ने बहुत लॉजिकल साइंटिफिकल एक्सप्लेनेशंस दिए वेयर इट केम फ्रॉम. अ लॉट ऑफ पीपल वर ऑल्सो बिलीविंग दैट दिस इज कलयुग and this was supposed to happen, meant to happen, and I feel like that's how they started leaning towards the why का आंसर स्पिरिचुअलिटी में ढूंढने लगे. एंड जिन्होंने BA किया बैठे हम सब and वो सुन रहे हैं and we are talking about it. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स का ये भी होगा, जैसे लोग उसको सोचते हैं पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कि लॉकडाउन के पहले जितने लोग भगवान पे जिनका भरोसा नहीं था, उससे ज़्यादा शिफ्ट वो क्यों हुए? बिकॉज डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ये जो बीमारी हुई है इसका क्या इलाज है हमें भी नहीं पता. तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे हो सकता है हम ट्राई कर रहेंगे इसको, मतलब ये पेशेंट को या फिर जो भी इंसान है उनको सेव करने का. बट अगर नहीं हुआ तो उसके हाथ में, तो तुम लोग चाहो तो उसको प्रे करो, हम लोग हमारी तरफ से ट्राई करेंगे. सो ऑन दैट नोट लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि अगर डॉक्टर से नहीं हो रहा है, when their prayers were answered, yes, they were like yes, I got do. goosebumps. तो वही because कोविड में मैंने भी एक्सपीरियंस किया, and he also experienced. Yeah, he talked to me about it. चेंज करने गया था तो we talked about it. Yes. तो like people ने like me, मैं ज़्यादा ड्रिवन नहीं था इस चीज़ को लेके, बट मैं पूरा शिफ्ट हो चुका हूँ अभी. मैं हर 2 दिन में एक बार मंदिर जाता हूँ. अभी मेरा ऐसा कि कोई नहीं सुन रहा तो भगवान सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. And to be honest, same. I have always been God's child बचपन से, क्योंकि मेरी family is very leaned towards भगवान and mostly I've seen Sai Baba's मूर्ति. that is what I was going to say. साई बाबा की towards बहुत lean है. It starts from my nana ji, and it came to my mama and my mother, and through my mother it comes to me. So Sai Baba is someone from 18th century. That's why वो connection बहुत easily हो जाता है. Not much time difference, no. तो that's why वो connection जल्दी हो जाता है उनसे, और वो आंसर भी करते हैं हमें when we ask questions and when we need guidance. मेरे घर से 8 किलोमीटर शिरडी. ओह, हम लोग मतलब 3 बार तो हम लोग चल के गए थे. What? हाँ शिरडी. You know, people from my family चल के पालघर से जाते हैं शिरडी. बहुत दूर. That is how much हमारा, हाँ, that is how much हमारा वो faith है. शिरडी? Yes. नहीं, like walking. No, but I do wish to. It takes a lot of, and I believe I have it. Yes. But वो अभी तक वो situation वैसे create नहीं हुई. And I feel कि जब something is created, situation जब मेरी life में create होती है, I feel like God thinks that I am now ready for it, and that's when it comes. So जब ready होगा तो आएगा. My mother goes to Shirdi for सेवा. वो सेवा मंडल अलग अलग है शिरडी के, जो वहाँ पे जो प्रसाद देते हैं, विभूति देते हैं, खाना जो उनका प्रसादालय होता है साईं बाबा का, वहाँ पे खाना, तो वहाँ पे काम करना, खाना परोसना, ये वो सब. तो वी वर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात करते हैं? नहीं, मैंने ये पॉइंट छेड़ा था, ऐसा कोई पॉइंट निकला नहीं था. मैंने बोला कि ये स्पिरिचुअल शिफ्ट जो हुआ, मेरे को लगता है ये पर्सपेक्टिव हो सकता है उसका. हाँ, नहीं, बट साईं बाबा के पहले कुछ हम बोल रहे थे. साईं बाबा के पहले कि हम लोग अभी शिफ्ट हुए इसके अंदर, और इसलिए साईं बाबा का पॉइंट निकला. वही. तो I told you कि there's a Sai Baba's मूर्ति in your home as well. Yes. That's where it comes from. My family. I said I was always a God's child, but वो एक connection होता है ना जो truly feel होता है हमें अंदर से. मतलब क्या है? God's child मतलब बचपन से भगवान का किया है वो, but वो ऐसा था कि हमारे माँ बाप को हम देख रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, है ना. ऐसा कभी नहीं था that I was an atheist or didn't believe. ऐसा कभी नहीं था. I was always surrounding with पूजा, पाठ, भजन and everything. But when COVID and everything happened, certain situations also took place in my life, and that and जब इंसान के पास कोई और resolution नहीं होता ना, जो चीज़ उसके लाइफ में चल रही होती, कोई और solution ही नहीं बचता, is when लास्ट सोल्यूशन वो ऑप्ट करता है भगवान के पास. और आई फील कि भगवान जान के तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डालता है कि अब कुछ नहीं बचा,
कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता अब मेरे लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा, तो आप बताओ. एंड देन ग्रेजुअली वंस यू रिकग्नाइज एंड फील दिस, एक साईं बाबा, एक फ्रेज है साईं बाबा का कि जब तुम एक कदम बढ़ाओगे ना उनकी तरफ, एंड आई फील ओवरऑल भगवान जी का यही होता है, तो वो 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाते हैं. सो यू नीड टू फर्स्ट लीन, यू नीड टू फर्स्ट गिव दैट हैंड फॉर हिम टू होल्ड, है ना, वो जबरदस्ती नहीं पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ. और जब भगवान चाहता है कि ये बच्चा मेरे पास आए तो मैं इसका ध्यान रखूँ, तब वो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालेंगे कि कुछ और बचा ही नहीं, तो अब आप उनके पास ही जाओगे. एंड देन ग्रेजुअली he definitely takes you to a better place where you then sit in a podcast like this and you say कि even I have been in a lot of things like this and today I am here and protected. God is in us and हम लोग उनका प्रचार हमारे थ्रू ही कर रहे हैं. Exactly, yes. Existence हमारे थ्रू ही हो रहा है. Yes, that is what he wants us to do. So same कलयुग तो चल रहा है, but वही है कि जितना लोग हेटेड फैला रहे, वायलेंस हो रहा है, वो दंगे चल रहे, उतने ही लोग शांति से मंदिर में अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, काइंडनेस. I do, but I'm not a regular meditator. Sometimes I do. महाशिवरात्रि के दिन होता ही है मेरा हर साल immense meditation. But I do want to start meditating on a daily basis. It does makes a big impact. मेडिटेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है, राइट? कि मतलब लोग बोलते हैं कि सेल्फ पेस में जाना इसको मेडिटेशन बोलते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं घूमने जाओ, या फिर अगर तुम वॉक कर रहे हो तो फिर चिड़ियों की आवाज़ वगैरह सुनोगे तो भी एक टाइप का मेडिटेशन है. तो व्हाट डू यू थिंक कि प्रॉपर मेडिटेशन क्या हो सकता है? लाइक आपका क्या टेक है उसके ऊपर? मेडिटेशन कम्स फ्रॉम again our Hindu texts. मेडिटेट मतलब ऋषि मुनि साधु संत हमारे मेडिटेट करते थे. आज भी काफ़ी वैसे डिवाइन लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं रोज़, एंड यू नो दे फील मोर लाइक डिवाइन लोग इन द सेंस सेंट्स आज भी हैं जो मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो ऑल्सो प्रीच अस नॉर्मल ह्यूमन्स टू मेडिटेट फॉर अस टू लिव अ बेटर एंड गुड लाइफ. तो आई फील देर इज़ नो प्रॉपर. हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि साधना, देन यू नीड टू गो इन अ प्रॉपर डायरेक्शन विद प्रॉपर गुरु लीडिंग यू. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साधना, वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एंड वंस यू टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन लेना इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, एंड वंस यू टेक दैट देन देर इज़ नो गोइंग बैक, एंड द चेंजेस दैट यू सी इन योर सेल्फ इज़ इमेंसली ग्रेट, मैसिव एंड पॉजिटिव. बट अगर तुम सिर्फ मेडिटेशन की बात करते हो तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे कि ये करोगे तो ही इसको प्रॉपर मेडिटेशन बोलते हैं. आई बिलीव कि फ्लो स्टेट में आ जाता है ना इंसान, तो वही मेडिटेशन है. अभी मैं समझ लो हाइकिंग कर रहा हूँ तो आई कैन क्लाइंब हिल्स विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तो वही मेरे माइंड में वही चलता रहता है, एवरीथिंग. आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन माय ब्रीथिंग एंड जस्ट क्लाइंबिंग. या फिर आई एम ईदर वर्किंग आउट, यू नो मेरे दिमाग में कुछ ही नहीं चलता तभी, ब्लैंक पूरा, नो थॉट्स एट ऑल. तो आई थिंक वही फ्लो स्टेट को मेडिटेशन, एनीथिंग दैट टेक्स यू टू दैट स्टेट इज मेडिटेशन. Anything. मैंने मेडिटेशन किया नहीं है. मैं मतलब क्या समझता हूँ कि जब मैं गाना गाता हूँ ना, तो उस टाइम मैं खो जाता हूँ उसके अंदर ही, खुद ही होता हूँ. तो मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम मैं पूरा ब्लैंक होता हूँ, और मैं उस टाइम खुद को सोचता रहता हूँ कि अभी क्या था, क्या हुआ है, कैसा सब सही चल रहा है, ऐसा करके. मेडिटेशन इज अ स्टेट ऑफ फ्लो. एनीथिंग दैट टेक्स यू टू दैट स्टेट ऑफ फ्लो वेयर you forget about the world around you and it's just you with you and the thing that you're doing is meditation. Don't you feel एक इंसान जब एक फ्लो मूवमेंट में आ जाता है या अपने फ्लो में आ जाता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है? Of course, yes, very much. When a person starts working on himself, the love he expects someone else to give and craves and you know begs for someone else, and then one day he realizes or she realizes that no, ये प्यार जो मैं expect कर रही हूँ, I think this is me asking love to give myself. कि भाई इतना प्यार तेरे में किसी और को देने के लिए खुद को दे. Give it to yourself. And when you start know that, I am telling you, when you start giving that love which you are craving from someone else, वो जब तुम्हारे अंदर जितना भरा हो तुम अपने आप को देना स्टार्ट कर देते हो ना, you literally see changes, you literally feel aligned, you literally feel like कि oh
now I feel complete. वो जो आधा अधूरा लग रहा था कि something is missing. This was missing. I was missing giving love to myself. And once you start that, and you will not understand what I'm saying until you really experience that. Correct. It's a very great feeling. Energetically वो feel होता है, बस वो energy उस frequency में तुम आओ तो तुम्हें feel होता है. उसको फिक्र नहीं होती आजू बाजू की कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में. Yes. Now again, that doesn't mean that you become unsympathetic, uncompassionate about people around you. Yes. कि तुम उसको फिर selfish There's a grey line. Yeah, there's a very thin line, very thin line. Because a lot of people self love के नाम पे खुद पे ध्यान दे रहा हो, खुद का करियर ये वो उसके नाम पे they don't realize how they are hurting someone, how they are being hurting तो दूसरे इंसान की बात होगी, but how they are being uncompassionate, how it is not going to serve them. उनको alignment से दूर लेके जाता है. And when a person is most aligned with himself is when he manifests faster, he grows better, and opportunities attract करता है वो. I can say bro, women are more mature than men. जो लोग बोलते हैं, but आज तो मुझे तो एकदम देखने सुनने सब मिल रहा है. Yes. Us bro, us. Us movement हो गया. मैं यही बोलूँगा. Okay, Nandini Bhanushali, it was really a pleasure having you in the show. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा तुम्हारी प्रेजेंस है यहाँ पे. एंड हम तो सिर्फ वुमेनहुड के बारे में जानने आए थे, लेकिन काफ़ी सारे सनातनी चीज़ों के बारे में वो जाने दो, या स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों के बारे में वो जाने दो, या इक्वालिटी के बारे में वो जाने दो. ये सारी चीज़ों के बारे में हमें आज ज्ञान मिला. Yes. एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर इट. Even I am very much grateful because I got a platform to speak about this perspective that I hold about life, men, women, relationships, spirituality. I don't think इससे कोई better जगह होती. Thank you so much for inviting me. But इतनी जल्दी फेयरवेल नहीं दे रहे हम आपको. क्यों? हमने कुछ लाया आपके लिए, हर बार भूल जाता है. Oh. We've got something for you. Yes, we've got something for you. Oh. अच्छा भाई. बहुत लॉन्ग पॉज हो गया. ठीक है, ये ले. Thank you. Thank you so much. This is for you. Thank you so much. So sweet. So, do you have something to say to our audience? Please guys follow, subscribe the ASP show. They are rocking, and the way they are making their guests feel comfortable, and the studio and the furniture and everything, the overall vibe and the positivity is immensely great. And I'm so thankful to Sanjeev and Pratik that they taught me, they thought that I was a good speaker for their podcast as a woman talking about women. You guys really, this day is very memorable for me. Thank you so much. Thank you so much. She's just being humble. हम लोग grateful हैं. हम लोग बहुत grateful हैं. And last but not least, हम लोग की आपको होस्टगिरी कैसे लगी? Amazing. And the way you guys have made me feel, मैंने start में ही बोला, the way you guys have made me feel comfortable. I don't think कि usually podcasters or podcasts ऐसे होते हैं, but really it was really nice talking to you guys. The questions, the answers, the talking, and the feeling that I got that yes, this is the platform I think worth है यहाँ पे जो मैं मेरा बोल रही हूँ. It is going to reach a lot of people. Thank you so much, and only positivity and only good wishes for the ASP show, and it's going to go heights. I can feel it. Yes, we are so grateful क्योंकि जो आपने कंटेंट दिया ना आज वो all over इंटरनेट पे नहीं मिलेगा प्रॉपर. इसकी कोई क्लियरिटी डेफिनेशन अवेलेबल है नहीं. तो आपके थ्रू बहुत लोगों की अवेयरनेस हो गया आज. Yes, क्योंकि लॉट ऑफ हमने एक बहुत ही डाइवर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की एक ही पॉडकास्ट में. फिर सीरियस फिर टोन. Yes. So this was our ASP show. Do follow, like, share and subscribe. अरे बहुत जोक पुराना हो गया मेरा, छोड़ दे. फर्स्ट पॉडकास्ट से वही कर रहा हूँ मैं. So follow us like you follow your dreams. Yes. That's it. Peace out.